हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं वो आपने सारी देखी होंगी और सारे चैप्टर्स कवर भी कर लिए होंगे। अभी हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to drive energy to perform various activities. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and the CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. First, respiratory organs. Mechanisms of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization. Lower invertebrate like sponges, coelenterate, flatworms, etc. exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. Special vascularized structure called gills. गिल्स किसके लिए होते हैं? ब्रैंकियल गिल से जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स and mollusk, whereas vascularized bags called lungs of vascular bag called lungs, that is pulmonary respiration. लंग से जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मनरी कहते हैं और जो गिल से होता है उसे ब्रैंकियल आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds, and mammals respire through lungs. Amphibians, like frog, can respire through their moist skin, that is cutaneous respiration also. Human respiratory system. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for both food and air. The pharynx opens through the larynx region to the trachea. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box. ठीक है, तो साउंड बॉक्स क्या होता है ये भी हम लोग को याद होना चाहिए. क्या होता है? लैरिंग्स कैसा है? कार्टिलेजिनस है. ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube. ठीक है, ट्रैकिया कैसा होता है? स्ट्रेट ट्यूब होता है एंडिंग अप टू अ मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री. तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे डिवाइडेड होती है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे डिवाइड होता है. ये हम लोग को याद रखना है. ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchiole, ending up in very thin terminal bronchioles. The bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. ठीक है, क्या कहते हैं? alveoli कहते हैं. The branching network of bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have two lungs that are covered by a double-layered pleura with pleural fluid between them. बीच में क्या होता है? Pleural fluid होता है. It reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic. उससे पहले ये फिगर 17.1 है. यहाँ पे क्या है? बना हुआ है, देख लो. ऊपर एपिग्लोटिस है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है.
ठीक है। फिर यहाँ पे दो पार्ट हो गए, दो मतलब लंग्स हो गए, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे ब्रोंकस क्या होता है, ठीक है, ये रिब्स हो गई, लंग्स, ये सब चीजें जो है, ये पूरा डायग्राम अच्छे से आपको याद होना चाहिए एकदम प्रॉपरली, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। Thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting from the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature. Exchange part is the site of actual division of oxygen and CO2. Actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. एक ऐसा चैम्बर होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum. ये भी याद होना चाहिए कि क्या होता है, dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung, that is pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ठीक है, डायरेक्टली हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप: breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar layer is released out. Next, diffusion of gases across alveolar membrane. ठीक है, फिर transport of gases by the blood, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue. तो पहले alveolar membrane के थ्रू, फिर next blood और tissue के बीच में. Utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction and resultant release of CO2, cellular respiration. ठीक है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पे? ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस: इंस्पायरेशन, which during which atmospheric air is drained in, expiration, by which the alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lung with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and intercostal between the ribs. तो रिब्स के बीच में क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं. हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं. इंस्पिरेशन is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. तो कैसे increase करता है? anterior posterior axis में the contraction of external intercostal muscle lift up the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration.
We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. On an average, an healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, which help in clinical assessment of pulmonary functions. तो spirometer के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 17.2। ए में क्या दिया, इंस्पायरेशन और नेक्स्ट पे एक्सपायरेशन, तो ये जरूर पढ़ लेना, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, टाइडल वॉल्यूम, टीवी, इंस्पायरेटरी रिदम वॉल्यूम, आईआरवी एंड ईआरवी। Tidal volume, volume of air inspired or expired during a normal respiration, नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हुए जितना वॉल्यूम अंदर बाहर जाता है, इट इज अप्रॉक्स 500 ml, दैट इज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml of air per minute. Next is inspiratory reserve volume. Additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. This average 2500 to 3000 ml. तो ये भी याद रखना है कि कौन सा कितना है, वो 500 ml रहता है, ये कितना रहता है 2500 से 3000. नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. This averages 1000 ml to 1100 ml. Okay. जितने भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमको याद करने होंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बच जाता है, दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. Inspiratory capacity, IC, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume, that is TV plus IRV. Expiratory reserve volume, total volume of air a person can expire after a normal inspiration. This includes tidal volume plus ERV. ERV is expiratory reserve volume. Functional residual capacity, volume of air that will remain in lung after a normal expiration. This includes ERV plus RV. Vital capacity, maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This includes ERV, TV, IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total lung capacity, total volume of air accommodated in the lung at the end of the forced inspiration. This includes residual volume, ERV, TV, IRV, or vital capacity plus residual volume. Next is exchange of gases. Alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यूज होते हैं. Mainly based on pressure, concentration gradient. Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also important factors that can affect the rate of diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented by a partial pressure of oxygen for oxygen, partial pressure of CO2 for CO2, partial pressure of these two gases in the atmospheric air, and the two sites of diffusion are given in table. जो नीचे टेबल दी गई है उसमें the data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. तो फिगर 17.1 में दे रखा है यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस है O2 है, CO2 है, और एटमॉस्फेरिक एयर में 159.3 एल्वियोलाई का दे रखा है. ठीक है, ये कैसे को पढ़ते हैं ये भी देख लेना. एटमॉस्फेरिक एयर में ये डेटाज याद होने चाहिए. ऑक्सीजन कितनी होती है 159, CO2 0.3,
एल्वियोलाई 104 हो गया, फिर 40 ब्लड में, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन कितनी होगी 40, ऑक्सीजनेटेड है तो 95, टिश्यूज में 40, और ऐसे CO2 का, ये सारी डेटा याद होने चाहिए, सबसे क्वेश्चंस आते हैं. Next is similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of CO2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. The diffusion membrane is made up of three major layers, तीन लेयर की बनी होती है, namely the thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries and the basement substance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन लेयर की बनी होती है, thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries and the basement substance in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. यहाँ फिगर में दे रखा है, एक ऊपर भी फिगर है 17.3, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, और नीचे फिगर है 17.4, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं. देखो बेसमेंट सब्सटेंस, और यहाँ पे देखो एल्विलाई का लेयर का नाम हम सब लिखे हैं, एल्वियोलर कैविटी है, ठीक है, मंथिक वॉल, सब में ये दोनों डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए, इन सब दोनों से क्वेश्चन आएगा. Next is transport of gases. Blood is the medium for transport of CO2 and O2. About 97% of O2 is transported by RBCs in the blood. The remaining 3% of oxygen is carried in the dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBCs, whereas 70% of it is carried as बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी किया जाता है. About 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma. Transport of oxygen, तो ये जितने भी परसेंट लिखे हैं ये याद होने चाहिए. ओके. Hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBC. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin, that is oxygen plus hemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. तो जब ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा करवाया, सिग्मॉइड करवाया. This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of CO2, H-ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. ठीक है, in the alveoli where there is high PO2, high partial pressure of oxygen, low PCO2 यानी CO2 का प्रेशर कम है तो लेसर एच-आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, कम टेम्परेचर पे, ये जो फेवरेबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ये जो है ये कब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए. वेयर एज इन द टिश्यू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई CO2 और हाई एच-आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर, कंडीशन कॉल्ड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो डिसोसिएशन कब होता है, एसोसिएशन कब होता है, ये आपको याद होना चाहिए. इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं. This clearly indicates that O2 gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets associated at the tissue and get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conditions. Next, transport of CO2. CO2 is carried by hemoglobin as carb aminohemoglobin, about 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of CO2. Partial pressure of O2 is a major factor which could affect this binding.
When partial pressure of CO2 is high and PO2 is low, as in the tissues में CO2 का pressure ज़्यादा होता है और oxygen का कम, more binding of CO2 occurs, whereas when the partial pressure of CO2 is low and O2 is high, as in the alveoli. ठीक है, तो ये कहाँ alveoli की बात हो रही है. Dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin take place, that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered to the alveoli. RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and a minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reaction in the both direction. CO2 plus water gives H2CO3, that is H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यूज होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे H2CO3 किसमें बाइकार्बोनेट और एचायन में टूट जाएगा और ये रिवर्सिबल होती है. At the tissue side where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, ठीक है, catabolism की वजह से CO2 diffuses into blood, RBC plus plasma and form bicarbonate and cation. At the alveolar site where PCO2 is low, जहाँ की CO2 का pressure कम है, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and water. Thus CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2 to the alveoli. यहाँ पे 100 ml में 4 ml CO2 डिलीवर हो रहा है और यहाँ 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन का डिलीवर होता है. ये भी याद होना चाहिए. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे वहां पे रेगुलेशन पढ़ा था वैसे यहाँ भी है. वहाँ न्यूरल और हार्मोनल था, यहाँ पे क्या है. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues. This is done by the neural system, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center, that is RRC, is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from the center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in these substances can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize ranges in CO2 and HIN concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial actions. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. नेक्स्ट इज डिसऑर्डर. जैसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में डिसऑर्डर पढ़े थे वैसे डिसऑर्डर इसमें भी है. फर्स्ट इज अस्थमा. अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes this is cigarette smoke. तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सबसे ज्यादा कॉज क्या होगा एम्फाइसेमा का. Next is ORD, that is occupational respiratory disorder. In certain industry, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation, leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissues, and thus causing serious lung damage. Workers in such industry should wear protective masks. अब जैसे हम लोग समरी डिस्कस करते हैं तो इसमें देखते हैं कुछ अगर बाहर का होगा तो ही इसको डिस्कस करेंगे वरना इसको डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे वैसे जनरली तो सब है ही, हम लोग कवर हो ही गया है, लेकिन ये सबसे लास्ट वाला जो पैरा है ये एक बार देख लो. Respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in the medulla region or brain,
a pneumotaxic center in the pons region of the brain and a chemosensitive area in the medulla can alter the respiratory mechanism. ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा डन हो जाता है. आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच. बाय.